उम्मीद हूँ जो है जिस टॉपिक का हम बात करने लगे टॉपिक देख के आप समझ चुके होंगे आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग चल जाएंगे HubSpot.com मार्केटिंग पे। ओपन हो रही है, अभी स्लो है थोड़ा इंटरनेट, तो इस पे हम लोग चल जाएंगे। सबसे पहले ब्रोकर की वेबसाइट ब्रोकर HubSpot.com गूगल क्रोम पे चले जाना है आपने सबसे पहले। और इधर हम लोग जाएंगे नीचे, और इधर हम लोग नीचे जाएंगे तो इधर हमारे पास मौजूद है टॉपिक, क्या नाम है इसका, हाउ टू यूज़ अ फंक्शन इन गूगल शीट्स। तो इस पे हम लोग चले जाएंगे, हाउ टू फंक्शन इन गूगल शीट्स। तो इस टॉपिक का ये नाम है, हाउ टू फंक्शन इन गूगल शीट्स। तो इफ़ गूगल शीट इन गूगल शीट्स in the function allow to check a condition and return a specific value if it true. And for instance, say you have a 3 columns in spreadsheet: channel, target and profit. You want to know which channel it a profit and higher the target. You can be use the if function or do so formal logic world look like this. If the target is higher than profit, it will be return yes. If don't, if not, if will be return or no. You can be the traffic track that data in another column and titled got valid. When you asking the if function in Google Sheets, you must use the following syntax: logical expression refers to the condition you are checking in the function value. If its value function will be returned if the logical explanation is true. Value if the false in the value function will be returned logical expression in false. Donate greater than donate equal or greater than donate greater than donate equal or less than, and donate to not equal donate to equal, and the channel target profit, and the select the cell in which formula will be applied. What about the formula following this syntax? Drag the mouse and to apply the formula to relevant cells, and C to buy to yes no to break the that down. Somewhere formula strike this if the profit from the email hurdle then targets perfect, then writes if the end. How to use a function with a multiple condition. And don't forget share this video. अल्लाह हाफिज़, हम नेक्स्ट ज़रूर मिलेंगे।